Hello everyone, this is Gupta and welcome to second episode of We Learn. In our last episode, we did talk about traveling and education and how technology is actually changing these industries. Today we have with us Subhash and Tanan, who is a dear friend of mine and who is working in the leadership team of I-Pac, an alumni of IT Kanpur from where he has done his bachelor's and master's in electrical engineering. And I think these guys are actually making a change in the political domain using technology and data. So over to you, Subhash. Can you please talk a little about your career and how you actually reached to those heights in your career? Good morning, Kamal. Thanks for the introduction. Good morning to everyone, all the people who are watching it live. As Kamal mentioned, I'm Subhash Tanan. He has already given the introduction. So I work in the political domain, especially leading the data analytics and the technology vertical of I-Pac. And Kamal mentioned that a lot of people are interested in terms of knowing what we do here in I-Pac. टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स को कैसे हम लोग पॉलिटिकल डोमेन में यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वन डोमेन विच इज क्वाइट न्यू and many people do not know about what are the things that we have already done in this domain and what other people are trying to do in this domain. I'll start from, as Kamal asked, that how I came to join this particular domain. So as usual, when I passed out from IT Kanpur, I started to work for a tech MNC. Worked there for 1 year. वहाँ पे काम बहुत अच्छा था, but one problem that I had was I didn't able to know कि कौन लोग है जो मेरा tech product use कर रहे हैं, and I didn't know the impact that I was making on those lives of those people. So वो एक चीज हमेशा रहता था कि जितने भी tech product, whatever the, let's say we are solving one particular problem, building algorithm, writing codes, but eventually क्या हो रहा है उसका, कितना impact आ रहा है. So I thought of let's go into domain जहाँ पे ये सब clearly देख पाए, because that was the initial phase of my professional career. So then I came to know about CAG. So I-Pac से पहले CAG was there, and CAG as a group of a few people, they started this political consulting domain, and they first started to work with BJP, Mr. Narendra Modi, our current PM, for 2014 general elections. After that, they changed name to I-Pac, Indian Political Action Committee. So I knew about CAG also. A lot of my seniors also were part of CAG. So I was following those people, what they are doing in the political domain, how they are trying to make something big in this particular domain. Then I got to know that they are trying to explore something in Bihar, and Bihar elections to 15 assembly elections. So वो elections का पूरा काम करने के लिए वो लोग तैयार कर रहे. So I thought let's join this thing, and the duration of that particular project was around 6 months. So I thought before I go into something else or try something else, let's go in the political domain and see what these guys are trying to do. As usual, all the young people who generally in India keep having discussion about politics, governance. तो हमारे यहाँ पे जनरली सब लोग पॉलिटिक्स गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं. So I also had that interest. So because of that interest, मुझे लगा कि एक बार जाके ट्राई करते हैं. 6 महीने का ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, तो इतना लेंदी भी नहीं है. लेट्स गो एंड सी समथिंग इंटरेस्टिंग. सो आई जॉइंड I-Pac in Bihar elections. I didn't have anything in mind कि क्या रोल पे काम करना है, टेक्नोलॉजी पे करना है, कि ऑपरेशंस पे करना है, कि सप्लाई चेन पे करना है, डिजिटल में काम करना है. I didn't have any idea. Even I-Pac also, when they hired me, they told me कि भैया you come here and then we'll see कि what you want to do here. Just come here and explore, because they had very small team, around 15 people. I went there, I started working in field operations. उसके बाद में मैंने डिजिटल में काम किया, टेक्नोलॉजी में काम किया. For 6 months, I worked in many different teams, I handled many different aspects of the political campaign. तो जब 6 महीना कंप्लीट हो गया, तो before when I came to I-Pac, I had that thing in mind कि 6 महीने में फिर कुछ और एक्सप्लोर करना. I found it really interesting कि चलो ठीक है, इसमें कुछ और एक्सप्लोर. Then I had a discussion with the senior members of I-Pac, and I explored that thing कि मुझे eventually क्या करना है. कि I wanted to build tech products. I wanted to solve the traditional problems using technology in any specific, not any specific domain, but any of the domains. But with one condition, that I should be able to see the impact of those things on the larger masses. So then I think अगर यही करना, तो let's try in the political domain something new. No one has done that thing. That time I decided कि let's build the technology and analytics vertical in I-Pac.
and try to solve all the traditional problems which are there in the political domain using the whatever the new technology that we have in the market. Because people are trying, even in that time also, people were trying a lot of things in e-commerce, in edtech, in agri-tech, fintech. So why not try this thing in political domain and let's call it Politech. So वहां से ये सब चीजें start हुआ. Then obviously by campaign we keep doing these things, and in every campaign we try to build new solutions using new technologies. तो वहां से अभी तक तो बहुत इवॉल्व हो गया. In last these 7 years we have done a lot of things in terms of using the analytics and technology in this specific domain. So Subhash, you started your journey as an electrical engineer, then you went to technology domain, and now you're working in political domain just to create some impact. And we all clearly know कि I-Pac ने 11 elections में से 10 elections जीते, which means definitely you guys are doing something different. So I have a very specific question. How exactly you guys are using technology to win those elections, या फिर political domain में technology को exactly कैसे use कर रहे हैं? What are these technologies? Can you be more specific to that? Yeah. So first thing is when we build these solutions, जब भी हम लोग technology, analytics या digital किसी का बात करते हैं within I-Pac, we don't limit ourselves to just winning the elections. Because the political domain is not just the elections. Let's say in one particular state, elections तो 5 साल में एक बार होते हैं, assembly elections, और let's say general elections भी आप मान लीजिए. But political domain में जो भी आप solution बना रहे हो, that those solutions have much larger scope. It's not just limited to the winning the elections. जब भी हम लोग इस तरह का काम करते हैं, तो हम जब भी कोई campaign उठाते हैं, obviously we have that thinking. Let's say we are working with a political party. So we obviously want that particular party to win the election. But जो भी process हम follow करते हैं, जो भी solutions हम लोग उसको बनाते हैं, those solutions are not just limited कि हर बार यही सोचना है कि पार्टी को कैसे जिताना, नहीं. So what we generally do, we keep this ecosystem in our mind, which is political parties, political leaders, and the public. These 3P ecosystem. हमारा हमेशा रहता है कि whatever the communication और interaction तो इन 3 एंटिटीज के बीच में जो होता है, उसको हमें टेक्नोलॉजी से स्ट्रीमलाइन करना. उसको हमें जितने भी इनका इंटरेक्शन होता है, वहां पे हमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से सब कुछ स्ट्रीमलाइन करना. फॉर एग्जाम्पल इन रिसेंटली कंक्लूडेड वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, वहां पे वन ऑफ द थिंग दैट वी वर ट्राइंग टू डू इज कि कैसे अब अभी आपको पब्लिक को अगर कोई भी इश्यू चीफ मिनिस्टर या किसी भी लीडर तक पहुंचाना होता है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. एंड यू डोंट इवन नो कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या एक पॉलिटिकल लीडर के पास पहुंचा नहीं पहुंचा. सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, वी केम विद दिस particular tech based solution, which is दीदी के बोलो, the name of the solution, but it had that technology base, जहां पे आपने कोई रिक्वेस्ट रेज किया, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा, फिर आगे उसका क्या सोल्यूशन हो रहा है, हर चीज का आपको जो स्टेटस है वो आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं. आप एक वेब प्लेटफॉर्म पे जाके जो है आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है. एंड जब आपका रिक्वेस्ट सॉल्व हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा. Similarly, other really good example is we see that political parties, they keep doing their party membership drive. Now it's a very lengthy process because a lot of political parties, they use the physical setup for the party membership drive. उसमें आपको क्या होता है, आपको ब्लॉक लेवल या पार्टी के कहीं ऑफिस में आप जाइए, या फिर उनका कोई स्टॉल लगा हुआ है वहां पे आप जाइए, आपको एक फिजिकल फॉर्म भरना होता है, आपको भर के आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन फी जमा कराई, आईडी कार्ड आपने दिया जो है, एंड देन यू विल गेट द मेंबरशिप. आपको उस वक्त आई कार्ड भी नहीं मिल पाता है, बहुत सारी सिचुएशन. नाउ when we were in Tamil Nadu, we wanted to do this thing for the particular political party, but because of COVID, we had to rethink this complete process, because in COVID you cannot have this much physical interaction between these entities just to get people registered for the party membership. So we came up with this tech based solution. वहां पे आप जाइए on the website of this particular party, आप अपना पूरा डिटेल डालिए, then we'll have 3-4 steps to verify your details. Then you upload your ID card, we verify the details. Then in the end, you get the iCard there only. You can download the iCard, or you get that on the WhatsApp also. आपको अपने फैमिली मेंबर को रजिस्टर करना है, वहीं पे आप रजिस्टर कर लीजिए. आपको अगर अपनी डिटेल्स अपडेट करना है कभी भी किसी मोमेंट को आप कर लीजिए. आपको पार्टी में कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, लेट्स से यू जस्ट डोंट नॉट वांट टू लिमिट योरसेल्फ टू पार्टी मेंबर, यू वांट टू गो अप इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द, यू वांट टू मैनेज पर्टिकुलर इवेंट. आप चाहते हो कि पार्टी आपके एरिया में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करे,
all those things you can interact with the party using that particular solution. So it's about picking any of the problem and then see कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके जो है वो आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इट्स अबाउट द बेस ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स आर कि जो भी इंटरेक्शन आपका इन पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल, तीन एंटिटीज के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको आपको टेक के साथ यूज करके उसमें टाइम आपको स्ट्रीमलाइन करना है, प्रोसेस आपको स्ट्रीमलाइन करना है, एंड पीपल शुड हैव द विजिबिलिटी. शुड नॉट बी लाइक कि आपने कुछ वहां पे रिक्वेस्ट रेज की, आपने कुछ वहां पे एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, बट यू डोंट नो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या हो रहा है, उसका नहीं हो रहा. सो दीज आर दी कपल ऑफ एग्जांपल जहां पे हम लोगों ने पहले भी मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत सारी हर कैंपेन में इस तरह के सॉल्यूशन बिल्ड किए. वन ऑफ द थिंग इज लाइक इन आंध्र प्रदेश. So the current CM of Andhra Pradesh, he did Padyatra, a very long Padyatra. He walked across the state during that Padyatra. Now a lot of people wanted to participate in that. अब पदयात्रा में आप let's say you are in a different district and आपके लीडर किसी और डिस्ट्रिक्ट में पदयात्रा कर रहे हैं, you might not be able to participate. But we build that mobile application. Using that, you can directly participate. आप जहां भी remotely हो, वहीं से उस पदयात्रा में participate करिए. You can walk with the leader using that. And let's say you want to upload few photos, you have taken the few pictures of leader, you have taken a lot of these things, you want to request leader कि that leader should come from your village और वहां पे ये 3-4 एक्टिविटीज करे, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन ऐप के थ्रू जो है लीडर के पास पहुंचा सकते हैं. सो रिमोटली लोग in a remote manner people used to participate in that particular campaign even if आप लीडर के साथ या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं हो. So इस तरह की चीजों से क्या होता है कि आपका पार्टिसिपेशन बढ़ता है एंड पीपल आल्सो गेट टू नो कि लीडर जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं. सो न्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स शुड नॉट बी ओनली चैनल टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन बिटवीन द लीडर एंड द पब्लिक. सो वो वाला चीज हम लोगों ने कई कैंपेन में स्ट्रीमलाइन किया. सो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. So, Subhash, if we are bringing transparency in a way, one of the features is transparency to these processes. Political leaders की तरफ से resistance नहीं आता है. So that's the thing. So a lot of people think कि political leaders की तरफ से resistance आएगा, but they are interested in this thing those are the people who are expert in the politics. They want to build that thing कि people should be able to directly communicate with them. That's why so many of the leaders are very active on Twitter or Facebook because वहां पे वो लोग चाहते हैं कि इस तरह का चीज होना चाहिए जहां पे पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट वो लोग कर पाए. बट you have to keep that in mind कि leader has lot of things to do in a particular day. So आपको इस तरह का solution बनाना पड़ेगा जहां पे in very limited, very short time आप leader को वो सारी चीजें communicate करने के जरिए बना के दे सकते हो. So we generally never have received such resistance from any of the political parties or leader. They are much more interested in terms of looking into these solutions and see कि कैसे उनका interaction जो है ना public के साथ direct किया जा सकता है. So election time पे तो ये direct I think interaction के लिए they must be ready. But after the interaction, like after the election, ये same solutions और processes work करते हैं कि आप public फिर भी interact कर सकती है after the election. Yes, that's the thing. So the medium might change, but all the leaders they want to stay active even after the elections also, because you need to understand for them that's the full-time thing. अब पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इलेक्शन ही एक वो नहीं है, उनके लिए वो एक फुल टाइम, वही उनका फुल टाइम कैरियर है. सो दे वांट टू स्टे एंड दे वांट टू यूज दीज सॉल्यूशंस टू स्टे कनेक्टेड टू लीडर्स. आपको एक और चीज है, इवन इलेक्शंस में भी यू हैव द स्टेट इलेक्शन, देन यू हैव इन द जनरल इलेक्शन, देन यू हैव द असेंबली इलेक्शन, फिर आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, उसमें अर्बन लोकल बॉडी है, रूरल लोकल बॉडी है, पंचायत इलेक्शन, दो लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव. सो इलेक्शंस के भी बहुत सारे ये पेजेस आते हैं एंड देन all these political leaders they have really that intent कि वो पूरे टाइम वो पब्लिक से कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं. तो आप कैसे भी अगर इस तरह के सॉल्यूशन, बट ऑब्वियसली यू नीड टू बिल्ड दीस सॉल्यूशंस इन अ वेरी सिंपल वे सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. आप उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकते बिकॉज यू आर नेवर गोइंग टू गो टू पब्लिक एंड एक्सप्लेन देम कि ये सॉल्यूशन ऐसे यूज करिए, एंड आल्सो इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इट टू ऑल द लीडर्स कि आपको ऐसे यूज करना. सो दीस सॉल्यूशन शुड बी वेरी सिंपल सो दैट एवरी वन ऑफ दीज एंटिटीज कैन इजीली यूज दीस सॉल्यूशंस. Right. So yeah, that's a really good example and some motivation for people who are listening to us कि आप actually impact create कर सकते हैं millions of लोगों पर by using simple solutions, which actually these guys are doing.
And other thing is, just to add one more thing, that let's say if you are working in a edtech or agri-tech or any of the domain, you have a user base, you have a public which is potential, who have the potential to use your product. In political domain, all the people who are above 18, they are in your that user base. They are the public who are interested, who have the potential to use your. So in the tech, if you want to have that tech perspective, this is one of the largest user base or the largest public, which if you build something really interesting in this domain, you have a very large user base, people who have the potential to use your product. Yeah, that's true. Almost everybody is Polytech customer actually. Yes, So, yes. for the viewers, actually, you can ask your question in the live chat of YouTube. आपके जो भी queries होंगे after these Q&As, we'll take all of those queries जितना हम लोग ले पाएंगे. So you guys can ask any questions if you want. So, Subhash, actually, in last 5-6 years, we have seen some really bad examples of Polytech. Actually, one of them is Brexit. कि फेसबुक का बहुत बड़ा पार्ट था ब्रेग्जिट करवाने के अंदर, राइट? कि फेसबुक के थ्रू जो लोग चाहते थे कि ब्रेग्जिट हो, उन्होंने पूरा मोबिलाइज किया. द सेकंड बैड एग्जांपल इज कैम्ब्रिज एनालिटिका. ऐसे और भी चीजें हुई हैं इलेक्शंस के टाइम पर या इलेक्शंस के बाद भी, जहां टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत गलत तरीके से यूज हुआ है. सो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि जब आईपैक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बिल्ड करता है, तो क्या उनका इम्पैक्ट भी लोगों पर, जो जनरल पब्लिक है, उनके लिए नेगेटिव होता है? और अगर नहीं होता तो आप लोग वो चीज़ कैसे इंश्योर करते हैं? सो वन थिंग इज, आप किसी भी नए डोमेन में या किसी भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसके कुछ नेगेटिव आपको एग्जांपल सुनने को मिलते हैं. इवन द मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है मार्केट में, जैसे ब्लॉकचेन और लेट्स से मेटावर्स, इन दोनों के भी आपको बहुत सारे नेगेटिव यूज सुनने. बट इट्स अबाउट कि कितना आपका जो पॉजिटिव यूज है, ठीक है, जो आपका एडवांसमेंट जो हो रहा है, वो कितना ज्यादा है कंपेयर टू दीज फ्यू ऑफ द नेगेटिव एग्जांपल्स. अभी तक आपको कभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है कोई इस तरह का नेगेटिव एग्जांपल पॉलिटिकल डोमेन में नहीं सुनने को मिला होगा. One thing is, we are not focused on taking or processing any of public data. We are not interested. As I mentioned, that we are interested in the working on the communication and the interaction between in the political domain. उसमें आपको जो है किसी का डाटा या कुछ लेने की जरूरत नहीं. हम लोगों को उस तरह के प्रोडक्ट पे, उस तरह के हम लोग सॉल्यूशन पे फोकस है जहां पे जो है पब्लिक जो है डायरेक्टली आपके लीडर के साथ इंटरेक्ट करे. एंड पब्लिक हैव द चॉइस. ऑल द लेट्स से यू आर, फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप किसी को अपना रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो, सो यू हैव द राइट कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो. वो आप यूजर पे, आपका कोई साइट से इंफॉर्मेशन चुरा के शेयर नहीं कर रहा है. यू आर द वन. अगर आपको लेट्स से कि यू हैव द प्रॉब्लम कि आपके एरिया में वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो आपको अपने एरिया का डिटेल देना होगा. अब लेट्स से यू वांट टू गिव योर ऑन डिटेल आल्सो, दैट्स ऑन यू. तो आपको सॉल्यूशंस इस तरह के बनाने होंगे जहां पे यूजर को आपको फ्रीडम देके रखना है कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट यू आर शेयरिंग, यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम कि आपको क्या-क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना है. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. लाइक इन ऑल द एग्जांपल दैट यू हैव गिवन, वेयर पीपल डिडंट नो कि उनका क्या इंफॉर्मेशन यूज कर लिया गया. तो यहाँ पे जितने भी अदर थिंग इज, वी डू नॉट बिल्ड एनी सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. वी डू नॉट बिल्ड whatever the solution that we build, the mobile apps that we have developed, the web application that we have developed, those are the standalone solutions. They are not dependent or they are not connected with any of these social media platforms. So it's not easy or it's not possible for anyone to get the information out of these systems. So, and then Indian government is also working on bringing new law in terms of protecting the personal data of all of our Indians. तो इस तरह के जब लॉज भी जब इंडिया में आ जाएंगे तो और सिक्योर ये सब चीजें हो जाएगी. तो इंडिया में अभी कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीजें नहीं आई है. एंड वन अदर थिंग इज, any of these most of the startups who are working in the political domain, those startups are working on these things, communications, interactions. तो जब तक आप इन डोमेन पे काम कर रहे हो तब तक you just have to give the freedom to user कि आपको क्या इंफॉर्मेशन देना है. and you also have the freedom to opt out. You have to keep those things so that people have the clarity कि आपको अगर अपना कभी अकाउंट या इंफॉर्मेशन आपको डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है, तो दे शुड हैव, उनके पास बहुत सिंपल एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू वो ऑप्ट आउट कर ले, जिसके थ्रू वो अपने इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते. सो इफ यू कीप, आप इन सब चीजों का ध्यान अगर रखते हो तो देन यू आल्सो बिल्ड द ट्रस्ट फ्रॉम द पब्लिक. दैट्स द थिंग. सो व्हाटएवर द प्रोडक्ट जो हमने अभी तक बनाया उनमें ये चीज रहता है कि इन द पॉलिटिकल डोमेन यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग और यू आर नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक सर्विस टू पब्लिक.
अगर आपको व्हाट्सएप या कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज करना है, उसमें आपको एक सर्विस मिल रहा है। पॉलिटिकल डोमेन में ऐसा नहीं है। तो आप जब आओगे कोई भी सॉल्यूशन यूज करने के लिए, यू शुड बी वेरी, पीपल हैव दैट वेरी क्लियर माइंडसेट कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो पार्टी मेंबरशिप के लिए आप यूज कर रहे हो, ये पर्टिकुलर चीज आप लीडर को रीच आउट करने के लिए यूज कर रहे हो, ये पर्टिकुलर चीज आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो वहां पे बहुत क्लियरिटी होती है इन टर्म्स ऑफ आप कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो। तो वही चीज है पब्लिक के पास, इसमें फ्रीडम अभी के लिए तो फ्रीडम बहुत है। तो पब्लिक पिक कर सकती है, चूज कर सकती है कि कौन सी चीज में पार्टिसिपेट करना है, किसमें नहीं करना। Okay. But anyways, in 2014 election or 19 election, we have seen that people were being mobilized using social media. There's no doubt about that. We all have seen that. So, and you're claiming that you guys are not using any social channels. So Why? yes, so thing is that we do not, so tech solution, obviously everyone is using social media. I'm not saying that we do not use social media. All the leaders have accounts on social media. But the solution that we build, the inbuilt solutions of the in-house solutions of I-Pac, we do not link something with Facebook or social media कि आपका जो है Facebook के ऊपर हमने ये एक ऐप बना के दे दिया, वैसा वाला चीज नहीं. But obviously social media in terms of the presence, all the political parties, political leaders, they use that, and I-Pac has no right to tell them कि आपको नहीं use करना या use करना. We do not have any right to tell any of these entities. So वो use करते हैं, but the thing is इंडिया में जो पॉलिटिकल वाला जितना होता है, आप अभी भी देखोगे जो मान लो पॉलिटिकल इवेंट्स जितने हो रहे हैं, रैलीज हो रही है, बहुत कम उनमें से ऐसे होते हैं जो आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, even in the COVID time also, it's not like people are just using the FB live or let's say YouTube live, these things. They are not using something other than these simple and basic solutions of the social media. Okay. So in terms of mobilizing people using the social media, that is not specific to the political domain. आप अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हो फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट गुड थिंग, that is not specific to political, and if let's say some individuals or anyone is doing that thing, that's on the government कि आप उन चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो, and they have the things in place to handle those things. But it's not first thing is not specific to the political domain. Second is whatever that all these startups who are working in the political domain, they are not trying to build something on what already have been done by the social media. They are trying to create their own solutions. Okay. So as far as I can see, like जो भी आप लोगों ने टेक प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं, do you have any kind of metric to measure the benefits to people and the benefits to political leader? मुझे जहाँ तक ये मतलब when I see these kind of solutions, mostly they look like they are favoring political leaders rather than the public, right? Because in Politech domain, at the end, your customer is actually the political leaders, right? So do you have any metric whenever you build those kind of products? There has to be some tech metric everybody uses. Yes. So, like in Didi Ke Bolo, if you go and on the official website, you'll see that they were able to solve the problems for more than 1 million people, more than one. Okay. Again, much more than this figure. So that's a benefit for public. Okay. For leader is that they are able to get this thing. Leader is listening to them. आप जो भी प्रॉब्लम बता रहे हो वो सॉल्व कर रहे हैं. In Tamil Nadu, we launched a couple of problems जहाँ पे in the COVID, the party distributed food packets to a lot of people. So people have the direct benefits from such solutions. So these tech solutions are just the medium of building that bridge between political parties, leaders, and people. Now the concept that you follow, let's say your concept is that during the COVID, even I-Pac also launched Sabki Rasoi one program, which was not political program. So during the COVID, when we had the lockdown, I-Pac का भी था कि भाई हमारे पास we have these many young people. अब लॉकडाउन में आप पॉलिटिकल काम नहीं करोगे जब इतना बड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो यू हैव टू पुट दैट इन पोज. एंड वी वर थिंकिंग कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो वी थॉट ऑफ दिस थिंग कि एक हम लोग पूरा चैनल बनाते हैं जहाँ पे पीपल कैन रेज द रिक्वेस्ट कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोगों को फूड पैकेट नहीं मिल पा रहे या फिर इतने लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट. सो वी हैड दैट वन हेल्पलाइन in that sense, and then the online platform, and then we tie up with the restaurants, with the startups which are working in the food delivery, and हम लोगों ने वो बहुत सारे लोगों को food delivery उसमें करवाया. So tech solutions are just to build that one platform and the one layer, and then it's about कि क्या आपने concept सोचा है. अब आपका concept अगर ये है कि you want to build a helpline and आपको लोगों की problem solve करनी है, it will give that platform. आपका concept ये है कि आपको जिन भी लोगों को फूड नहीं पैकेट्स नहीं पहुंच पा रहे, फूड मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा, आपके पास वो पहुंचाना, दैट्स द कॉन्सेप्ट. देन यू बिल्ड द टेक फॉर
like that. So in Telangana, we also tried in Tamil Nadu, we also tried one really good thing where we tried to link volunteers and the people who were in need. So it's not like कि I-Pac जब help कर रहा तो ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो individual level पे help करना चाहते थे, but they didn't know कि कहाँ जाके कैसे help करना. So we had this program where you can register as volunteer. If in your particular area, if we get any request, we'll forward it to you. And आप जाके उसमें किसी को ब्लड का रिक्वायरमेंट था, किसी को एम्बुलेंस चाहिए कोविड के टाइम में नहीं मिल पा रहा है, कोई एजेड पेरेंट्स है या कोई उनके घर पे कोई अभी नहीं है, उनको मेडिसिन चाहिए. तो इस तरह के नॉन पॉलिटिकल भी बहुत सारे टेक डोमेन में विच इज यूजिंग टेक विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल दी गवर्नेंस इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट. तो इस तरह बहुत से सॉल्यूशन बने हैं जहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक को बेनिफिट होता है. Okay, so Subhash, we have we were talking about from the start about elections and how exactly you guys are using technology in elections right now. इसके अलावा पॉलिटिकल डोमेन के अंदर और कौन-कौन से एरियाज है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ चेंज ला सकते हैं? फॉर एग्जांपल वन इज जो भी पॉलिसी मेकिंग होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. Can it be done by some other, maybe some company, maybe some third party, or maybe some tech through some tech solutions जो open source भी हो सकता है ताकि वो public के लिए helpful हो. So what are these areas? So when generally we talk about the political domain, so you know that in India and any of the countries, political domain and political system and the governance are interlinked. So whenever जब भी आप कुछ solution political domain के बना रहे हो या governance के लिए बना रहे हो तो आप एक larger public को देख रहे हो using these two domains. So in the governance part also there are a lot of new age startups जो पॉलिसी में जो डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट को हेल्प करता है टेक्नोलॉजी यूज करके. किसी भी चीज के लिए हो सकता है कि आपको to identify the grievances of public. Let's say you want to bring the budget for a particular year. आप किसी एक स्टेट में बजट आप बनाना चाहते हैं. You want to have the participation of public for that. So there are companies, there are solutions जहाँ पे public participation से you get to know कि what are the things that public would like to see in budget. What are the things the public would like you or the government to focus in the budget. So इस तरह की बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप पब्लिक से ग्रीवेंस ले सकते हो, पब्लिक से सजेशन ले सकते हो, पब्लिक से यू गेट टू नो दीज थिंग्स की क्या ऐसा है जो पब्लिक को चाहिए, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली मॉडिफाई व्हाटएवर द पॉलिसीज एंड द बजट दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग so that you are able to accommodate all the different communities, different groups of the public. So बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप जो इस पर्टिकुलर डोमेन में काम करती है जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है, और उस पर गवर्नमेंट को डायरेक्टली फायदा होता है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड पब्लिक. Until unless you do not know कि what public क्या प्रॉब्लम है ग्राउंड पे, क्या पब्लिक को चाहिए, there might be possible there are 10 different problems at the ground level, but public want you to focus on these, let's say, 2 problems for next 1 year or 2 years. So you until unless you go among the public and ask them कि क्या ऐसी चीजें जो अभी आप फोकस करना चाहते हो, अगले 2 साल आप करना चाहते हो, let's say for a government, for any of the governments ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप 5 साल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, नहीं हो सकता. It's a continuous process. But you have to know कि 5 साल में पब्लिक, उन 5 सालों में पब्लिक को क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं. वो सारी चीजें आप जो बहुत सारे स्टार्टअप है, जो बहुत सारे टेक बेस्ड स्टार्टअप्स भी है इन द गवर्नेंस डोमेन आल्सो, जनरली दे आर वर्किंग विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट आल्सो, जहां पे वो उनको हेल्प करते हैं पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग करने में, उनको ये हेल्प करते हैं पब्लिक एंड जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनसे कनेक्ट करवाने के लिए, उनको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग दिस सर्वे एंड पोल्स टू अंडरस्टैंड कि किसी एक पर्टिकुलर स्कीम आप लेके आए, कोई बिल लेके आए, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, पब्लिक उसको रिसेप्टिव है या नहीं है, पब्लिक को उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए. ये सारी जो चीजें है उस पर अभी बहुत सारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं. इन नेक्स्ट 5 to 6 years you will see that public will have much more say in the government bills, in government policies by these tech based solutions. Wow, that's awesome actually. So, and for the young people who are listening to us, what are the career options they have to join this political domain? And one more thing, can you be more specific to technology side? Like there are definitely roles of operations, I guess, marketing, and what are the technological roles people can play? You can talk about in general as well. Yeah, I mentioned when you asked कि कैसे मैं I-Pac join किया क्या, उस वक्त मैंने बताया कि मैं when I came to this particular domain, I didn't have anything in mind in terms of कौन से टीम में काम करना है, कहाँ काम करना है, क्या रोल में काम. So यहाँ पे आपको अगर ऑपरेशंस से रिलेटेड काम करना है उसका भी बहुत स्कोप है, डिजिटल कम्युनिकेशन का बहुत स्कोप है आपके यहाँ पे आपको रिसर्च, स्ट्रेटेजी, कैंपेन प्लानिंग, दैट्स आल्सो रियली वन इम्पोर्टेंट थिंग. So these are, I am talking first about the non-tech things.
दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको मीडिया रिलेटेड बहुत सारे आपको स्कोप रहते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको रोल जो आप दिमाग में रहते हैं, जो मार्केट में किसी भी आपको डिफरेंट डोमेन में दिख रहा है, यू विल सी ऑल दोस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, बिकॉज यहाँ पे एंड टू एंड चीजें आपको मिल जाएगा कि आपको ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है पब्लिक में, कोई भी आपको पब्लिक इंटरेक्शन के लिए आपको डिजिटल कम्युनिकेशन की जरूरत है, आपको मीडिया की जरूरत है, आपको रिसर्च चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कैंपेन प्लानिंग चाहिए। दिस आर द नॉन टेक थिंग जहाँ पे आप कभी भी आप एंटर करके अपना करियर बना सकते हो। Then the tech part also. Tech, when I say tech, I include both tech and the analytics part. Tech analytics में one of the interesting thing in India is this is the one domain जहाँ पे even when I-Pac also has worked in 7 to 8 years, अभी भी हम लोगों ने बहुत ही small percentage of the possibilities explore किए जो इस डोमेन में हो सकती है even after these many years. So there is lot of scope in this particular domain जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स को यूज करके बहुत सारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स है जिनको आप सोल्व कर सकते हो। एंड इन सब के लिए जो है आपको बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी प्रॉब्लम उठाइए, आप डे टू डे फेस करते हो। आप भी एक जितने भी लेट्स से आई एम अज्यूमिंग ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस लाइव, दे आर आल्सो रजिस्टर्ड इलेक्टर्स, दे आल्सो वोट इन इलेक्शंस, सो वो दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, यू कैन थिंक ऑफ दैट थिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन। सो इस तरीके से टेक वाले में भी जितना भी इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रामिंग, देयर इज नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्रोग्रामिंग यू लाइक टू यूज इन दिस। आपको कोई भी सॉल्यूशन बिल्ड करना है, लेट्स से यू टू बिल्ड अ मोबाइल ऐप इन जावा कोटलिंग, और आपको हाइब्रिड मोबाइल ऐप बनाना है, वो आपको जितनी पॉसिबिलिटीज आपको किसी और डोमेन में होती है वो सारा यहाँ पे आपको मिलती है। यू वांट टू बिल्ड बैकएंड इन पीएचपी पाइथन या किसी भी चीज में। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट I-Pac, in any of the startups that you work in the political domain, you get that freedom because अभी इस डोमेन में ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको यही टेक्नोलॉजी यूज करना है। इस डोमेन में अभी तो ये है कि भैया आप कोई प्रॉब्लम उठाइए, उसका कोई सॉल्यूशन बना के लाइए। आप उस पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम उठाए, आपका उस टेक बेस्ड सॉल्यूशन बनाइए। तो उसमें आपका टेक्नोलॉजी क्या यूज करना नहीं करना, दैट यू हैव दैट फ्रीडम। सो वट एवर मार्केट में जो जो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, उसके जो बेस्ट पॉसिबल आपको लग रहा है आप यूज करिए। तो जितनी भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपको इवन इन एनालिटिक्स ऑल्सो, जितने आपको मशीन लर्निंग, आप एआई मार्केट में जितना यूज कर रहे हैं किसी भी डोमेन में, आप सिमिलर दोस थिंग्स यू कैन यूज इन दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। तो इन सब चीजों में क्या क्वालिफिकेशन कोई क्राइटेरिया होता है? लेट्स से सपोज I-Pac की बात करें, स्ट्रैटेजी के लिए अगर किसी को ज्वाइन करना है, ऑपरेशंस के लिए ज्वाइन करना है और टेक डोमेन में ज्वाइन करना है, इज देयर एनी लाइक मिनिमम डिग्री क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पीपल मस्ट हैव? So in I-Pac, let's say specific to I-Pac, when we hire people for these different roles, ऐसा नहीं होता है कि आपका एक कोई स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हायर किया जा रहा है। उसमें कई आप कोई हो सकता है एंट्री लेवल पे आ रहा है, समवन इज कमिंग एट द मिड लेवल, समवन एट द सीनियर लेवल, एंड डिपेंडिंग ऑन आप किस एंट्री लेवल पे आप I-Pac में ट्राई कर रहे हैं, यू विल हैव द डिफरेंट क्राइटेरियाज। बट इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कि आप इसी कॉलेज से होने चाहिए, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, आपको ये पर्टिकुलर स्किल सेट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। When you go, let's say I-Pac के आप कैरियर स्पेस पे जाओगे, you'll see a lot of openings, and all the openings will have different criteria. Even a lot of time when we, so I'll give you just the context of I-Pac was started. So I-Pac का अभी भी we generally when we internally discuss, we do not call I-Pac company, we call it a platform. I-Pac को अभी भी हमारा वही concept है कि I-Pac को एक ऐसा platform है जहाँ पे कोई भी जो political domain में कुछ भी try करे, there are a lot of people who want to try different things in the political domain, but they do not want to join the political parties. They want to stay in the professional domain and they want to. We want to create that larger platform for the people जहाँ पे आप political domain में जो भी चीजें ट्राई करना है, आपको टेक बेस्ड सॉल्यूशन बनाना है, आपको कैंपेन प्लानिंग में काम करना है, आपको डिजिटल कम्युनिकेशन में काम करना है, आपको मीडिया में काम करना है, बट पॉलिटिकल डोमेन में। तो ये जितने भी इस तरह के यंग इंटरेस्टेड जो इंडिया में है, उनके लिए हमारा टारगेट है कि उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे वो आके जो है इन सब चीजों को ट्राई कर सकते हैं, and they can make some meaningful contribution in the political domain. So we do not have any strict criteria for any of the job roles that we have. So आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप you go through the process, ठीक है, and you are able to clear that process, आप आइए काम करिए। And that other thing is I-Pac ने इसीलिए because of these things we wanted to relax that criteria, we wanted to give more freedom to, and we wanted to increase our scope in terms of hiring more people in I-Pac in political campaigns. We have different employment model. आपका core team member, then we have one fellowship जहाँ पे people join I-Pac just for let's say one election. Let's say you are from राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन में आपको ओनली राजस्थान इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, and आपको उसके लिए I-Pac नहीं ज्वाइन करना, you can participate in our fellowship program where you will get a chance to work in that specific particular campaign.
a lot of people participate as in for a short duration also, short-term members. Let's say someone has taken sabbatical for 2-3 months, and that person wants to see कि political domain में कैसे होता है, कैसे ये सब चीजें किया जाता है before making the decision to quit his or her job. आप 2-3 महीने sabbatical लेके भी आप short-term member की तरह ज्वाइन करके काम कर सकते हैं. Then, if you do not want to do all those things, let's say you are working in a particular job and still you want to participate in the political domain, you can become the volunteer of I-Pac in a particular state, जहाँ भी आप हो, आप उससे participate कर सकते हो. So, ये different employment model हम लोगों ने with the time we keep increasing these things so that larger young people or the larger pool of the interested people can participate in the political domain. उससे आपको ये नहीं है कि I-Pac में एम्प्लॉय बनना ही होगा, आपको तभी आप कर सकते हो. आप एम्प्लॉय बन सकते हो, आप फेलोशिप ले सकते हो, आप वॉलंटियर बन सकते हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए आ सकते हो. So these different things, employment model that we have developed in last 7 to 8 years. Okay, so guys, now you know how you can join any Polytech company. And I have a very specific question which I wanted to know always. And this is my last question. We have gotten a lot of questions from audience as well. इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग उन सब पर डिस्कस करेंगे. तो अभी तक जितने भी इलेक्शंस में ईवीएम्स यूज होते हैं, क्या कभी फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड ऐसे सॉल्यूशंस बने विच विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर डिसेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे इलेक्शन हैकिंग वगैरह पॉसिबल नहीं हो? इस तरह की चीजें क्या आपको लगता है फ्यूचर में होगी? एंड विल दीज पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्ट दैट? That's really interesting because blockchain ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो कई फील्ड में यूज हो रहा है. अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में अगर देखो, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में वी स्टार्टेड फ्रॉम द बैलेट पेपर. हम लोगों ने वहां से स्टार्ट किया, कई सालों तक हमने वो यूज किया. दैट हैज इट प्रोज एंड कॉन्स. देन द इलेक्शन सिस्टम, जो इलेक्शन कमीशन है, उनका हुआ कि भाई लेट्स बिल्ड समथिंग न्यू जहां पे थोड़ा एफिशिएंसी बनाया जा सकता है. देन वी स्टार्टेड टू यूज ईवीएम्स. So from ballot paper to we shifted to EVMs, and it took a lot of years. It's not like एक साल में अपना shift हो गया. Now next thing that I see is using these blockchain technologies to make that next big evolution in the political system. EVM and जो अभी current system है, उनके साथ एक बड़ी problem वो है polling percentage, जो voting percentage होता है. In last general elections, जो हमारा voting percentage है, which was around 67.5%. So out of 100 people, only 67 or 68 people voted in the elections. Eligible 100 people. क्यों? एक जो issue हो सकता है that is that for the to cast your vote, आपको एक polling booth पे जाना होता है. तो let's say you are from someone who is from Jaipur. That person is working in Pune or Bangalore or Bombay. अब आपको अपना वोट डालने के लिए वहां से अपने जॉब से छुट्टी लेके you have to come to जयपुर, और वहां पे आपको that's also one specific day. आप अपने हिसाब से डे नहीं पिक कर सकते, आपको वहां पे आके वोट डालना होगा. So this physical process that we have in the voting system across all the countries, it's not specific to India. जहां भी है वहां पे अभी आपको फिजिकली जाके डालना होता है in most of the cases. ये एक जो प्रोसेस है, ये ब्लॉकचेन एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आपका. When you build remote voting system using the blockchain technologies, you'll be able to solve this problem. So voting percentage आपका definitely increase होगा. Second, जितना भी ये रहता है कॉन्फिडेंस वाला जो चीज है वोटर के लिए कि आपका वोट जो है वो जो आपने जिस पार्टी को दिया है उसी को गया है. दूसरा, क्या आपका वोट वोटिंग काउंटिंग डे पे काउंट हुआ या नहीं हुआ. दीज टू थिंग्स कैन ऑल्सो बी सॉल्व यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, जहां पे ब्लॉकचेन में इस तरह के रिमोट वोटिंग सिस्टम है जहां का आपको ये पता चल जाए कि आपका वोट जिस पार्टी को आपने डाला उसी को गया है, जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला है उसी को गया है. दूसरा, काउंटिंग के डे आपको पता चल गया कि आपका वोट काउंट हो गया. सो दीज टू थिंग्स, वन इज removing this physical setup that we have for the voting so that we are able to increase the participation and eventually we have the higher polling percentage. And the second is giving the much more visibility to people in terms of किसको आपने वोट किया और कब आपका वोट काउंट हुआ. These are two things which definitely can be solved using blockchain. And I'll give you a few examples, like countries like in Argentina. In Argentina, there's one startup which has developed the prototype of this remote voting system for the Argentina government. They are trying this thing. In Russia, they have used in the local elections. In US also, in a couple of states, they have tried to use this blockchain. So there are a lot of countries which are trying to build these solutions and trying to shift from the physical setup to the remote voting system. In India also, I think last year, Telangana government, they have released one blockchain policy report, जहाँ पे उन्होंने list down किया है कि क्या-क्या blockchain के possible use हो सकते हैं related to the governance, in terms of land record, in terms of the voting, in terms of a lot of other things also. And the Telangana government, they are also trying
to build these solutions, remote voting solutions using the blockchain. They have been doing this thing for a long time. So in next few years, there's higher possibility that we see few really good solutions related to the, in terms of the shifting from this physical setups to the remote voting setup using the blockchain. In the next 3 to 4 years, we might be able to see some really good promising solutions for that. ब्लॉकचेन के अलावा कोई और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? Definitely, there might be, because tech is the one particular thing which is changing very fast. But currently, blockchain is one thing which is very promising. That's the thing. There are a lot of things which, so in terms of these cryptocurrencies are the proof of concept in that sense. So that's one example of blockchain. A lot of in Maharashtra government, they have started to use this thing for the land records. They are trying to build solution to use blockchain technologies for the land records, so that they are able to streamline that process. People should be able to know that this particular land was first brought by this particular person, then given to this person, then you are buying it to one particular person. So in the medical records also. So different state governments in India, they are trying blockchain technologies, and they are trying to build solutions where they should be able to streamline these things. So currently, blockchain is one of the promising technologies that we see in the market. 2017 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दिया था. So in India, it's not limited to the US or any of those countries. In India also, in state governments also. Because one thing is, now in India, we have that those technologies, we have people who can do these things, we have startups which are interested to do these things. So now it's easy for Indian governments also to leverage these technologies. So we're definitely going to see something really interesting in next few years. So let's start with audience's question actually. Abhilash का पहला question है. Hello, I have a good knowledge in politics and want to work as a political analyst. How can I start my career? Could you please guide me? Please explain more on political analyst role. Exactly political analyst का role क्या होता है और कैसे अभिलाष इस सेक्टर में अपना करियर बिल्ड कर सकता है? Yeah. So political analyst का जो role है, first I explain the political analyst role. Political analyst का role है basically कि whatever the situation that you see on the ground in terms of the political situations, आप उसको analyze करके in terms of the using your analytical skills, आप उसको analyze करके you are able to first understand this problem, फिर आप उसका कोई solution आप suggest कर सकते हो. Any of the, let's say in whatever the elections happening in UP or Punjab, Kerala, कहीं और, for example, किसी एक particular party को नए state में expand करना है. So, like it's very similar to, let's say if you want to open some particular business in particular state. First you'll go there, आप वहाँ पे analyze करोगे पूरी situation को, you'll see all the factors which might impact your project, and then you build the solution. Political analyst का जब ये काम है कि आप political situation जो है वो आप analyze करिए, उनको analytical terms में आप analyze करिए, and then you break down that problem and you try to find the solution for each of those smaller problems. Political analyst का आप उसमें जो है आपको political knowledge use करना है, आपको उसमें electoral knowledge आपको use करना है, आपको उसमें analytic का भी knowledge use करना है. So using these knowledge, you should be able to identify the problem and then understand and find the solution of that thing. Now coming to the building the career in this thing, to specific to I-Pac, आप I-Pac की वेबसाइट पे जाके जो है आप बहुत सारे रोल्स है वहाँ पे कैरियर स्पेस पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. you'll see a lot of roles specific to states also, जहाँ पे I-Pac अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. अगर आपको अभी आपके इंटरेस्टेड कोई रोल नहीं मिल पा रहा है तो आप I-Pac के पेज पे भी जाके या फिर डायरेक्टली आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रोल के लिए आप इंटरेस्टेड है, एंड देन डेफिनेटली वी कैन सी कि कहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. It's specific to I-Pac. For other domains, other companies also, you can go on their website. You'll definitely see a lot of job openings there, and you can start from there. I think Abhilash was more asking about what are the skills he should have to be a political analyst. Yeah, that's first is you should have the basic understanding of the political domain. That is basic understanding at least. Then is you should have the analytical thought process. That is basically you should be able to understand the numbers also, because in the politics it's about कि कहाँ पे कितना % voting हुआ है, कितना हुआ है, कितने लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कितना वोट शेयर आपको मिला. To win the elections आपको कितने वोट शेयर चाहिए. Third is then that you are able to understand कि पब्लिक को आप, you cannot just randomly build the solutions.
आपको पब्लिक की वहां पे डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी को समझना होगा कि इस पब्लिक के लिए फॉर दिस प्रॉब्लम आपको इस तरह का सॉल्यूशन बना के, तो उस तरह की जो चीजें है जो आपको दिमाग में आनी चाहिए। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आपको प्रॉपर कोई टेक स्किल होनी चाहिए या प्रॉपर कोई आपकी स्किल होनी चाहिए। इट्स नॉट मच ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम। आप वहां से स्टार्ट करिए, लेट्स से कि यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो ठीक है, आप एंट्री लेवल से स्टार्ट कर लीजिए, देयर इज नो इश्यू। एंड फिर आप उसके बाद में वंस यू गेट इनटू द सिस्टम, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीजें आपको इंप्रूव करनी। Okay, we have a lot more questions, so I'll get on with that. Sanihe and Ro LTG, I don't know how to pronounce that. Both of them are asking कि जो online voting है वो future में किस point पे possible होगा and what are the possibilities? Will that happen or not? Okay. I already explained that thing in terms of the blockchain technologies. Most of the state governments, they have already are in that mode that they are trying to use the blockchain. Even the election commission is also trying to build solution on that thing. I think in next couple of years, you'll see the initial solutions of these things, not the full proof, but you'll see the initial. So it's not like कि आपको blockchain या फिर जो remote voting system वो directly general elections के लिए use करना है या assembly elections के लिए use करना है, like EVM. It's not like we started to use EVM for the large scale at once. हम लोगों ने कुछ एक इलेक्शन में यूज किया, then next election में, then next, and then we started to explore that thing. वीपैट जो हमने ईवीएम के साथ अटैच किया, वो भी हम लोगों ने एक एक इलेक्शन से यूज करते हुए स्टार्ट किया. Similarly, for blockchain in next couple of 2 to 3 years, I am that much optimistic that you will see the use of blockchain based remote voting system in the at least at the local level in terms of the in the local elections. Okay, that's great. I think we'll definitely see that online voting system soon. इससे voting percentage भी काफी increase होगा. So आसिफ खान का question है, how can a independent political candidate use this platform with limited resources? कोई political candidate कैसे use कर सकता है, limited resources हैं उसके पास this platform? So obviously there is in India अभी भी जो सी कि कहाँ से इस तरह का कंसर्न आता है, बिकॉज अभी भी इंडिया में जितनी भी स्टार्टअप्स है ये सब दे जनरली वर्क विद द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एट द लार्जेस्ट स्केल. धीरे धीरे विद टाइम विल सी कि स्टार्टअप्स विल स्टार्ट वर्किंग विद द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स आल्सो, बट till then there are different platforms. One of the platform is youth in politics, जो I-Pac का एक प्लेटफॉर्म है, which is in terms of it's not specific to one election campaign or one specific party. दिस इज यूथ इन पॉलिटिक्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इन माइंड की बहुत सारे यंग लोग या फिर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं जिनको पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना है एज ए पॉलिटिशियन, बट उनको वो गाइडेंस और उनको वो सब रिसोर्सेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ दी यूजिंग टेक स्ट्रेटेजी कैंपेन प्लानिंग, जिससे वो अपने कैरियर पाथ को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए उनके. सो यूथ इन पॉलिटिक्स जैसे प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं जहां पे यू कैन get registered with Youth in Politics, and then the YIP team, Youth in Politics team, will provide you help in terms of building your political career, even contesting the elections. They first will assess कि आपका current status क्या है. It might go for someone he is just starting, or someone is, let's say, already has developed 50% capabilities. Depending on that, they will discuss with you, आपको guide भी करेंगे throughout your journey. So time being, जब तक startups आके individual कंपनीज आगे इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए साथ काम नहीं करना स्टार्ट करती है, तब तक आप यूथ इन पॉलिटिक्स जैसे, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज नथिंग इन यूथ इन पॉलिटिक्स. द पर्पस इज दैट ओनली दैट पीपल इन इंडिया, द यंग पीपल हु वांट टू बिल्ड देयर करियर इन द पॉलिटिकल डोमेन, दे शुड हैव सम हेल्प, दे शुड गेट द गाइडेंस, एंड I-Pac which has developed that capability in 7 to 8 years, so we thought that thing we should be able to do this thing and we should do this particular thing. So वहां से यूथ इन पॉलिटिक्स है, तो आप उससे में पार्टिसिपेट कर सकते हो. So yeah, Asif, youth and politics join करें and I think आपका problem most probably solve हो जाएगा. सुमित का next question है, Subhash, do you think every political party need more digital presence to survive in future elections? So one thing is sure that I'm not sure about that you need digital presence to win the elections or not, but one thing is sure, you need digital presence to stay connected with the public. For the win or loss, we cannot see because there are a lot of political parties which are still not that much active on the digital platform, but they're still winning the election. But in a larger context, if you want to stay connected with the public, with the masses, you need the digital. Because one thing is, now in India, people have the experience of using smartphones, mobile phones. So you need to have that thing if you are able to connect with people using these mediums. So
And that's the thing we have seen in the past, if you do not evolve yourself with the market, with the new age evolutions, जो नए सॉल्यूशन मार्केट में आ रहे हैं, आप उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं करते हो, इवॉल्व नहीं करते हो, तो दैट माइट इफेक्ट यू नेगेटिव. सो बेटर थिंग इज कि आप डिजिटली जितनी चीजें आ रही है, टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है, आप उनको यूज करिए टू एटलीस्ट टू स्टे कनेक्टेड विद द पब्लिक एंड वोटर्स. Okay, so in a way, within certain time, I think digital presence की जरूरत रहेगी, जैसा सुभाष भी कह रहे हैं. So the next question is of Ravi Shankar Kumar. What are the qualities the I-Pac is looking for in an individual to get hired? So, as I mentioned that we hire for different roles at different levels. So, one thing is obviously you should be interested to work in the political domain. First thing is that कि आपको political domain में interest होना चाहिए. Second is you should have skills related to any of these things in terms of digital communication, media, strategy, operations, technology, or analytics. Any of these things. We hire for all these. ये दो चीज अगर आप में है, definitely you can get into I-Pac. एंड एक जैसे मैंने बोला है कि भाई ये चीजें जो I-Pac में आप आ सकते हो, आपको शॉर्ट टर्म काम करते हैं आप उसके लिए भी आ सकते हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मॉडल में नहीं आना है तो आप फेलोशिप वाले मॉडल में आ सकते हो, उसमें भी नहीं आना है तो आप वॉलंटियर बन सकते हो. तो यू हैव ऑल दीज ऑप्शन. Okay, Subhash, Gautam Burman का क्वेश्चन है, is there any scope for the people from Northeast to work in I-Pac? Yes, definitely. So we, as I-Pac is also, for us, Northeast is one geography where we haven't worked. So we worked in West Bengal. We have not worked beyond that. So we definitely want to work in the Northeast. We are currently active in, we are working in Tripura, Meghalaya, these states. So definitely you can, we have, this is the right time because we have the presence in the Northeast states. For us, so when we worked in last in Punjab and UP, after that we started to work in South India because we wanted to go there and we wanted to do the election. We didn't want to limit ourselves to one geography in India. Now we want to try and want to see and explore that thing. Are we able to understand public in Northeast India and are we able to do something there meaningfully? So definitely, we are also trying that thing. So you definitely can join us. Okay, so there's one more question by Vivek Dhaya, who is actually a student of Alforo as well. Do you think technology is moving slowly in political space compared to other sectors? If yes, what are the reasons? Yes, I agree with that thing. I mentioned that thing. So till like 5 to 6 years back, people were interested in the technology in the political domain. बहुत सारे लोग political domain का discuss करते रहते थे, but they didn't see any platform, they didn't see any structure in this particular domain. तो उनको लगता था कि political domain में अगर काम करना है तो आपको political party join करना पड़ेगा. 6-7 साल पहले की बात करें तो किसी को भी अगर political domain में काम करना होता तो उनको political party join करनी होती. Now with time there are things, there are platforms, there are companies जहाँ पे आपको as a professional आप काम करो. So definitely I agree that compared to any other domain in India, political domain में बहुत late ही आया है, but I see this as an opportunity. People who are interested in this domain, for them this is an opportunity. कि अभी भी जो है political domain में बहुत कुछ है जो कि explore करना बाकी है. I see a lot of people see that e-commerce, a lot of these things कि बहुत कुछ saturate कर गया है. आपको बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम उठा के करना पड़ेगा. पॉलिटिकल डोमेन में ऐसा है कि बहुत सारे इस तरह की ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप टेक से सॉल्व कर सकते हो. सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल डोमेन इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी, फॉर देम दिस इज द राइट टाइम. दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आल्सो यू हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज आल्सो. So definitely I agree on that part, but I see that as an opportunity for the people who are interested in the political domain. Okay, thanks Subhash. I think Vivek, Subhash का simple सा मतलब है कि बहुत opportunities है अभी, and if you want to go into political space, yeah, you can create something big there. There's one question by B Shiva Kumara. Is there any training centers for political strategists? Political strategists के लिए कोई training centers available हैं, or is I building that? Yes. So I don't think currently we have any message started such things in terms of training the political strategies. But it might be possible that in future, I-Pac or someone else tries to do that thing. But as I mentioned that youth in politics has these two options. One is where you want to be politician. Other is you want to do something in political domain, not as politician or not as electoral candidate. So आप भी वही कर सकते हो कि either you join I-Pac or you can stay connected with youth in politics, जहाँ पे आपको political ecosystem जो है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी. वहां पे आपको दोनों तीनों ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आप कैंडिडेट आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, एक है जहाँ पे इलेक्शन नहीं आपको कंटेस्ट करना, बट यू वांट टू हैव अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल डोमेन. तो आप वो वाला प्रोग्राम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं.
तो वन ऑफ द ऑप्शन दैट आई सी करंटली इज यूथ इन पॉलिटिक्स, एंड आपको अगर फुल टाइम इसमें आना है तो आप आईपैक के थ्रू आ सकते हैं. Okay, so yeah, I think youth in politics again, Shiv Kumar, you can join that, and you'll be able to uh, understand political domain better, I guess, right, Subhash? Yes, yes. There's one more question I want to ask. Like, what are the key reasons that you guys were able to win 10 elections out of 11? So there is no one specific recipe for that thing. It's about that one thing is that we invest a lot of time to understand public. So you see that in most of the elections that we have taken elections with a significant duration. Like when we worked in West Bengal, we worked for 2 years. When we worked in Andhra Pradesh, we worked around 2 years. In Tamil Nadu also, we worked around more than 1 year. So when you see in Punjab, we worked around 1 year. Most of the elections that we have taken, we have worked there for a significant duration only because we invest our 3 to 4 months to first understand public. So that's one big difference that I see, that first you have to go, because even after 8 years, we cannot have that perception or that mindset that we know everything about any of these states. We do not have that thing. आपको कहीं भी स्टेट में जाओगे, लेट्स से आईपैक एजेंट वर्क इन राजस्थान, अगर आप हमें राजस्थान में काम करना होगा तो हमें जीरो से स्टार्ट करना होगा. First, we have to understand public in Rajasthan, because the voting behavior, the perception of public, a lot of things are very different in Rajasthan compared to West Bengal, compared to Tamil Nadu. Tamil Nadu is very different compared to Punjab. So all these Indian states, they have very, very unique and different from each other in terms of the characteristic of the demography, and also their expectations from the political leaders, their expectations from the political parties. तो आप कहीं भी जाओगे आपको वो समझना होगा. That's the first thing. Second is, we try to be much more adaptive compared to any of the companies, even not in the political domain, in an outside also. If you see that in each of the campaigns, we do not try to repeat anything that we have done in the past campaign. Because for us, we have that concept कि जो हमने एक campaign में कर लिया है, वो तब सबको पता है, तो कोई भी जाके भी कर लेगा. उसमें there's no big secret in that. ठीक है, आप कहीं भी जाके वो campaign कर सकते हो. So every time we try to push ourselves, people who are with us, all the young people who are working with I-Pac, कि आप हर campaign में जो है, you don't try to copy paste from the last campaign. आप जो है ना हर campaign में जाइए, समझिए public को, and then you try to build solutions specific to that particular public. तो ये वाला चीज आप कहीं भी देखोगे, हम लोगों ने हर बार जो है नया सॉल्यूशन बनाया, हर बार नए कैंपेन डिजाइन किए, हर बार हम लोगों ने नए तरीके से पब्लिक को से इंटरेक्ट किया. सो दैट इज सेकंड थिंग. थर्ड इज अडेप्टिव इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज, न्यूएस्ट एनालिटिकल सॉल्यूशंस, new age solutions for the digital communication, for the marketing. So these things. And we are really lucky. The fourth thing is that we are really lucky that we have people from all our top colleges in India, really smart people who are working with I-Pac. So that's also one big advantage for I-Pac, that because of the thing that we have started in the political domain, people have that trust in I-Pac. And because of that, we get really smart people to work with I-Pac. So that's also a very big thing, big advantage for us. Okay, okay. So Subhash, Abhilash ka question है आपके लिए. Any chance I-Pac is coming to Karnataka on 2023 assembly election? So we are not sure at this moment, but let's say whenever we decide these things, generally we announce it formally also. So if let's say we do any of these things in terms of moving to Karnataka and working there, we're definitely going to announce it before we move there. Okay, okay. So Mahima ka question hai. Oh God, I really don't want to ask this. Okay, so Mahima ka question hai. Okay, I'll go with it. I don't know is the right thing to ask or not. Can Rahul Gandhi win this coming election using technology? Because social media has trolled him so much that his presence is negative. So how can he win? So the one thing is, answer, that's okay. If you don't want to answer, that's also yes, okay. yes. So one thing is, as I mentioned in start of the session, use of technology and analytics in the political domain is not just limited to winning the elections. Not just limited to winning the elections. So, and other thing is, it's not only about technology also. It's about the concept. It's about how you plan your election campaign. So there are two different things. The one is the political campaigning, and other thing is using technology for the political campaign. But still you have to plan your campaign. Still you have to build those things. So obviously I cannot say that thing कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है किसी भी चीज के लिए.
The one thing is that I can definitely say that technology can help any political leader, any of the political leader in India, to better connect with public, to better understand public. And these are the two things that you definitely need to win any of the elections. So it's not about one person is going to win or not, but the thing that we are talking about is the technology definitely can help them to stay informed, to build a better communication channels with public and to better understand the aspiration of public. And definitely these things can definitely help you win the elections. That's for sure. Okay, so at the end राहुल गांधी भी शायद जीत सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी यूज करे या नहीं करे. Right? People like us, they are not that much experienced in the political domain to make any of such statement because we don't know those things. So what experience that we have, even I-Pac also, what experience that we have the experience in political campaigning, not in predicting the future. So we do not know any of these possibilities. But one thing I can say for sure that with any of these leaders, technology can definitely help them in building that really good connect with public. And one thing we all can agree that building a good connect with public is really beneficial for any of the political leaders or parties in the elections. So that's one thing that we can definitely do. Okay, so the thing is, if even Subhash knows about it, he won't tell that. I don't know about this. के साथ रहते रहते थोड़ा थोड़ा I'm diplomatic saying वो भी that thing. I don't know about these things. Okay, yeah, sure. I don't think anyone knows about this particular thing because you cannot see this. We have seen in any of these elections that in West Bengal also people were saying that this political party is going to win, and then the other political party won the elections. So I'm saying that in any of the elections, it's very difficult to predict about that. Okay. Until unless you have the information which is required to predict something, and this prediction is very, very generic. So it's not like I don't want to say, I do not know this. Okay, and one more thing, जितने आपने you did your B.Tech and M.Tech, and then right now you're working in the leadership team of I-Pac. Actually, you are one of the top people in I-Pac. आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे व्हाट आर द रीजंस एंड जो भी अगर लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं एंड दे वांट टू फॉलो योर पाथ तो वो just tell us 2 to 5 ingredients for success which made you who you really are. So I don't call this as a big success. It's a very natural progression that I had. So mentioned that I joined I-Pac just after having 1 year of experience in the tech domain. One thing that I had very clear thing in my mind that कि I-Pac में आके I didn't limit myself to one particular specific thing. I-Pac में आने वाला ये था कि जितनी भी चीजें आपको मिले ट्राई करने के लिए आप वो सब ट्राई करें. Because one of the problems that I see in many of the domain that people get stuck with one particular thing. कि आप मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो आप 2 साल से वहीं पे काम कर रहे हो, सेम टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो. आप किसी ऑपरेशन टीम में काम कर रहे हो तो आप 2-3 साल से वही एक ही चीज यूज किए जा रहे हो. तो यहाँ पे I-Pac had that जहाँ का इकोसिस्टम एंड दी वर्क कल्चर दैट वी हैव, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि लेट्स से आप ज्वाइन किया आपने एज ए डिजाइनर. सो देयर वाज वन जूनियर, my junior in I-Pac. The person joined as a designer and then he shifted to data analytics. There are a lot of people who joined in, let's say, field operations, shifted to digital communication. People joined in digital communication, they shifted to field operations. So I-Pac provides you that opportunity. ये नहीं है कि आप data analytics में हो गया तो आपको data analytics में ही perform करके दिखाना. After, let's say, coming to I-Pac, you might realize कि नहीं, this is, you don't want to do this thing. You are more interested in doing field operation. And you are convinced कि आप field operation में ज़्यादा better से impact ला सकते हो. तो ठीक है, you work into it. So I kept my options open in terms of जो भी opportunity आ रही है, keep doing those things, keep learning, and then in a larger context, I'll see कि किसमें से क्या जाके काम करना. So it's not like I picked technology in I-Pac. हम आए करते गए वो वाला चीज and then eventually decided कि let's after 1 or 2 years कि let's pick this particular thing. I still work on lot of non-tech things in I-Pac. So that's one thing कि कभी भी आपको अगर opportunity मिल रहा है इस तरह की चीजें करने के लिए, to try to explore as many things that you can explore before getting into one specific thing. आप explore करिए, and that's for the people who are just starting their career. For them, it's really good thing कि आप explore करिए. आप छोटे 6 महीने 1 साल 2 साल के experience पे अपना decision मान लीजिए. आप explore करिए ये सब चीजें, and then you decide कि आपको किस बात में जाना. And other thing is always like specific to political domain.
यहाँ पे as I mentioned कि बहुत सारी opportunities है. तो I am also and the data and tech team members in I-Pac, all the people who are part of this ecosystem, they are focused on finding solutions to new problems. That's what we even tell when we hire people. कि आपको यहाँ पे आके ना कोई existing solution नहीं use करना. And you'll not be able to find solution of these problems on Google. आप आइए, समझिए और हर बार आप नया प्रॉब्लम उठाइए और उसका सॉल्यूशन बनाते जाइए. If you keep following these things, definitely आप इस तरह के पाथ पे जा सकते हैं. Other thing is, I stayed here for around 7 years. So that's also thing कि आप अगर मार्केट में देखो तो अभी ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि आप 1 साल में जॉब चेंज कर लीजिए, 6 महीने में जॉब चेंज कर लीजिए. But thing is, if you are liking the work, if you see the opportunity, stay there. It's not आपको करियर बनाने के लिए 5 जगह काम करने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, आप वहां पे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हर बार आप नया सीख पा रहे हो, then you stay there till the time you are able to learn new things, till the time you have the opportunities to work on new things. आपका ग्रोथ वहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है, you stay there and try to build your career with one company or let's say with one organization. Okay, so it was like keep your mind open, whatever you want to do. The second one is जो भी अच्छा लग रहा है वो करो. Just follow what you love or what you like, right, Subhash? And the third Yes, thing, you don't get into this trap कि आपको जॉब चेंज करना ही है, इधर जाना है उधर जाना है, because आपके साथ के लोग कर रहे हैं. आपको करना ये कि आपको अगर अच्छा लग रहा है काम करना, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां को, आपका वहां पे जो है वर्क कल्चर आपका ऐसा बना हुआ है जहां पे आपको वो कॉम्पिटिटिवनेस आपको आ रही है. ठीक है, आपको हर बार डेली यू आर एवरी डे ऑन द जॉब यू आर फीलिंग दैट थिंग कि आज कुछ नया करना है, ये वाला प्रॉब्लम है इसको 2 दिन में सॉल्व करना है. वो अगर आपको वहां पे चैलेंज मिल पा रहा है, यू कीप बिल्डिंग योर करियर देयर, यू कीप वर्किंग देयर till the time you are getting these things. and third thing Subhash mentioned was learn as much as you can and learn new things, right? So there's one more question by B Shivakumar again, how he can actually join youth in politics. So we have website and mobile app, both the things for youth in politics. आप यूथ इन पॉलिटिक्स की वेबसाइट पे जाइए एंड वहां पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और यू कैन डाउनलोड द मोबाइल ऐप एंड यू कैन रजिस्टर देयर आल्सो. वेरी सिंपल प्रोसेस. यू गो देयर, आपको 5 अपनी बेसिक जानकारी वहां पे देनी है और वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं. Okay, एक विवेक का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द challenges I-Pac have faced till now which is different in political space compared to other industries? Yeah. So one thing is mentioned before also कि political domain अगर आप एज ए पॉलिटिकल कैंपेनिंग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो अगर आप, तो आपको फर्स्ट थिंग है कि यू हैव टू गेट इनटू दिस थिंग एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो हर बार हम लोगों को ऐसा होता है कि देखो फॉर एग्जांपल यू आर इन अ होटल बिजनेस, लेट्स से आपने कहीं पे एक होटल बिजनेस किया, आप नेक्स्ट जगह जाओगे, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू यूज योर रेसिपीज ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट स्टेट. आपको अलग दूसरे स्टेट में जाके फिर से नया रेसिपी नहीं बनाना है, आपको हो सकता है 20-30% आइटम्स के लिए बनाना हो. I-Pac के लिए ये चीज रहता है, चैलेंजेस दैट वी फेस, कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर जाओगे आपको जीरो से स्टार्ट करना ही होगा. You cannot use things that you have done in a different state and then you trying to use this thing in a other state. वो नहीं कर सकते हो. So that's one thing कि आपको जाके वहां पे एक्सप्लोर करके आपको चीजें पब्लिक से समझ के you have to build the understanding and then you start building your political campaigns. So that's a one challenge that we face. But as I mentioned that we know that this is the thing and we have to do this thing and this is working as an advantage for I-Pac because we follow this particular model. So this is one thing. Second is let's say specific to analytics. To use machine learning or AI, you need a larger set of information to build a really good model. In India, even if you let's say you want to go in a particular state and you want to use the election data to build a particular model to predict the let's say election results. Now the one problem is that you have the elections in every 5 years. So even if you let's say you take 5 data points, it's a 25 years ago. And a lot of things definitely have changed in those 25 years. And if you are using that 25-year data, that's only 5 points. One, you'll not get really good results in that. Second, you'll not be able to predict because the nature of public has changed in 25 years. So that's one really big problem that we face specific to analytics when you're trying to build these models, let's say electoral models that you would like to build. Similarly, in let's say in any other domain that you go, one thing which is not a challenge, that in any of the state that you go, you also have to develop your linguistic capabilities. If you go in Karnataka, you have to have your really linguistic capabilities specific to Kannada. In that, if you go in Rajasthan, you have to build it related to Rajasthan or the dialects, the Rajasthani language. If you go in Punjab, you have to build your capabilities in Punjabi language. So like these things, but now after working in many states, we have also developed that much experience.
and these habits. Whenever we go there, we do not feel these as challenges. We know that these are the part of the regular work that we do. Okay, I think Vivek शायद आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा. And one more thing, Subhash, क्या आप प्लान कर रहे हो पॉलिटिक्स में जाने के लिए? That's why you are working in political domain since 7 years. No, that's the thing that I'm still working in political domain because I know there are a lot of things which can be solved using technology analytics in the political domain. As someone asked that question, political domain में अभी भी tech का use analytics का use बहुत slow है compared to other domain. I agree with that thing. So that's the thing. I think either in any other domain that I go, I'll definitely have much lesser opportunity compared to political domain because यहाँ पे अभी भी explore नहीं हुआ. Even you compare ourselves with let's say US or Britain or any of the European countries, वहां पे जितना टेक एनालिटिक्स यूज होता है गवर्नेंस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल डोमेन में, उतना अभी हम लोग अभी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए. एंड नाउ वी हैव दैट टैलेंट, वी हैव दैट एक्सपोजर, वी हैव दोस टेक्नोलॉजी इन इंडिया कि नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में वी डेफिनेटली कैन रीच एट दैट लेवल जहां पे जनरल पब्लिक जो है उनको भी टेक्नोलॉजी यूज से जो है दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद द लीडर्स, दे आर एबल टू कनेक्ट, दे आर फीलिंग दैट दे आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम. उनका रोल जस्ट जो है ना वोट करना नहीं है कि आप जाके बस वोट करके आ गए. उनको ये लग रहा है कि वोट करने के बाद में भी 5 साल वो लोग गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल एंटिटीज से कनेक्टेड है. वो जब तक हम लोग रीच नहीं करते तब तक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. ओके, एक बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन आया, आई डोंट नो, माधवन का है. when will be the Bihar campaign interview will be scheduled? So I'm not sure about that thing, but अब जो है बिहार का जब भी स्टार्ट होगा, मान लो अगर कर रहे होंगे लोग कभी भी, तो डेफिनेटली आपको कॉल बैक आएगा. और अगर आपको डायरेक्टली पूछना है तो यू कैन ड्रॉप एन ईमेल टू आवर एचआर, वो आपको डेफिनेटली इस बारे में बता पाए. ओके, आई थिंक ठीक है, अब हम लोगों को एंड करना चाहिए ये लाइव सेशन. सो गाइज, नाउ I-Pac इज एक्चुअली हायरिंग थ्रू L4O एज वेल. L4O एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक रिलेटेड चीजें सीख सकते हैं, नॉन टेक रिलेटेड चीजें सीख सकते हैं. राइट नाउ दीज गाइज आर टीचिंग web development courses and sales courses so that you can join some esteemed organizations. Simple L4O का total mission ये है कि tier 2 tier 3 cities से जो actually real problem है इंडिया का unemployment, उसको solve किया जा सकता है through their 100% placement guarantee program. And now one of the shortest path to join I-Pac is to join L4O's program. And other than that, जैसा सुभाष ने कहा कि लाइफ का एक एम होना चाहिए टू क्रिएट ए मेजर इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइफ. जैसे कि हम लोग, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जैसे ही रिवर के अंदर हम लोग एक कंकड़ पत्थर फेंकते हैं ना तो रिपल्स क्रिएट होते हैं. तो सुभाष लोग हैं या I-Pac जो है वो एक रिपल क्रिएट उन्होंने किया है. अब उस रिपल का इफेक्ट जो है, आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो पॉलिटिकल डोमेन में आएंगे आने वाले टाइम में, एंड दे विल डेफिनेटली क्रिएट अ डिफरेंस फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर आवर पॉलिटिकल सिस्टम. So I think relearn का second episode हम लोग यहाँ पे end करेंगे. And if you guys have registered for e-certificate, that there's one link in the description में अगर आप देखेंगे YouTube के, वहाँ पे आपको एक link मिलेगा e-certificate लेने के लिए. उस link पर जाइए, अपना details डाल दीजिए, you'll get your e-certificate in 24 hours. इसके अलावा guys, stay safe and keep learning new things. वही एक तरीका है successful होने का. Subhash, you want to say like some end words? Yeah, so as Kamal mentioned, someone asked during the session also कि I-Pac में आने के लिए क्या डिग्री चाहिए, किस कॉलेज से होनी चाहिए. So one of the new thing that I'm seeing in India in past couple of years that आपको specific to tech domain कि अगर आपको टेक्नोलॉजी में कोई कोडिंग आता है, let's say you are really good in developing mobile apps, तो फिर आपका डिग्री उतना मैटर नहीं करता. आप अगर किसी रीजनल कॉलेज से भी हो, still you'll have much higher chances to get into any of the top colleges if you have that really good skills. आप मोबाइल ऐप बना सकते हो. In the end, even if you are from the top college, आपको मोबाइल ऐप बनाना है, आपको वो स्किल आनी चाहिए. अगर आपको मोबाइल ऐप बनाना है, if you are able to learn that skill even without attending let's say any of the top colleges, आपने किसी भी let's L4O के थ्रू आपने वो स्किल्स आपने एक्वायर की. So that's the thing. If you have that skill, it will get very, I'm not going to say very easy, but you'll get more opportunities to get into any of the top companies, including let's say I-Pac, which is leading the political domain. You'll have higher chances to getting into this domain, given that you have that skill. Let's say you are in the mobile development or web development, or you are really good in terms of developing algorithms. आपको अगर ये skill set आपको आता है, तो आपके chances
3 times, 4 times, 10 times आपके बढ़ जाएंगे किसी भी उसमें जाने के लिए. So that's one thing that I wanted to add. Thank you, Kamal, for hosting me. Also, thank you everyone जो भी live इसमें देख रहे हैं. It was really nice session. Okay, and guys, for the Relearn third episode, we'll come with some new face and who is from a different industry. We have covered like traveling, education, and political domain now. Next week, it will be a different industry, and you can join our Telegram channel for further information, जो description में mention किया हुआ है, so that you can stay connected with us. और हर वीक हम लोग इस तरह के नए सेशंस करते रहेंगे एंड नई नई इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे सो दैट वी कैन नो वेयर वी फिट राइट और जहां पे हम लोग एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सुभाष फॉर जॉइनिंग अस. Thank you.